Welcome back. We said we'll tackle your personal finance questions now, and our expert Harshvardhan Roongta of Roongta Securities is ready to tackle them. Our first caller, Harsh, is Surendra Kalantri. He's calling from Thane. Surendra जी, कहिए आपका सवाल क्या है? मैडम, मैंने LIC में इन्वेस्टमेंट किया है जी। एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें सम इश्योर्ड 1 लाख का है, जिसका 5,500 प्रीमियम जाता है जी, और एक 5 लाख का इंश्योरेंस है जिसका कुछ 30,000 रुपये प्रीमियम जाता है मैडम। तो मुझे 10 साल के लिए मतलब अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए 10 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे क्या इंश्योरेंस करना चाहिए, मुझे कैसे आगे जाना चाहिए? अच्छा, वेल एक्सपर्ट आपको शायद ये अच्छी तरह बताएंगे कि आपको निवेश और इंश्योरेंस को अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। हर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता। बट ओवर टू यू हर्ष, व्हाट वुड यू एडवाइज हिम? ही वांट्स मनी फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड ही वुड प्रेफर इफ यू आंसर्ड इन हिंदी। वेल सुरेंद्र जी, आपने जो अपना इंश्योरेंस का डेटा बताया है वो एक इट्स बहुत ज़्यादा महंगा है। आप एक सेविंग्स बेस्ड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो एक टेक्निकली इंश्योरेंस नहीं होता है। बट नेवरदलेस आपको अभी जो आगे करना है वो ये है कि आप चाहते हैं कि 10 लाख रुपया आप इकट्ठा कर लें 10 साल के बाद, और अगर आप इसके लिए अगर 5,000 रुपया हर महीने अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये टारगेट कंफर्टेबली कवर अप हो सकता है। सिर्फ एक चीज़ है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपके पास लंबा अरसा है, 10 साल है आपके पास, तो रिस्क जो है वो धीरे धीरे कम होते रहता है इक्विटीज़ में। नाउ मैं आपको 2 फंड बता देता हूं जिसमें आप ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3,000 रुपया आप HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप 3,000 रुपया हर महीने का इन्वेस्ट करिए, और बाकी के 2,000 रुपया जो है वो है SBI इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, इसमें आप हर महीने 2,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। सो इस प्रकार आपका अगर हम 10 साल का व्यू लेते हैं और एक एवरेज 12% रिटर्न देखते हैं कि आपको इन दोनों फंड के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा, तो आपको करीबन 11.5 लाख रुपए इकट्ठा होना चाहिए। तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देगा आपके बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से। अब इंश्योरेंस की बात आती है। इंश्योरेंस मैं चाहूँगा कि आप एक टर्म इंश्योरेंस कवरेज पे थोड़ा ध्यान दें, उसके बारे में थोड़ा पता करें। वो एक सही तरीका है अगर आपको अपना इंश्योरेंस कवरेज प्रोटेक्शन करना है तो, और वो भी अमाउंट आप अपनी जो सालाना इनकम है उसका करीबन 10 टाइम आप उसको मल्टीप्लाई करिए और उतना कवरेज आप लेने की इमीडिएट प्रोसेस चालू करवाइए। तो ये आपके लिए ज़्यादा एक अच्छा तरीका होगा जिस प्रकार आप अपना इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस सेपरेट करके और दोनों प्लान कर सकते हैं। Okay, so that's the call coming in on the first query, but let's get to the second query then. Manish Yadav calls in from Jaipur. Manish, go ahead. Manish, is my voice reaching you? Okay, I don't think we have him on a good line, but anyway, his query is on the screen where he would like to invest 5 lakhs lump sum, and how should he allocate his money? I think his time period, Harshvardhan, is 5 years, and the goal is 20 lakhs, and his goal in terms of eventual investment is for his child's education. So what would you recommend? Well, I do see the query in which he says that he wishes to accumulate a corpus of 20 lakhs in 5 years and needs to set aside an amount of about 5 lakhs in a lump sum form. Now, well, if he needs to generate that kind of returns, he needs about 32% annualized returns for his 5 lakhs to become 20 lakhs in 5 years. Now, this is certainly not a good idea to even think that you can expect that from any investment, because this will lead him to take some uncalculated risk and probably go wrong with his investment decisions. Further, I'm also going to be recommending him not to take risk with this 5 lakh of rupees, because he needs it after 5 years for sure, and that also for his children's education. So my recommendation to him would be that he parks this money in a bank FD, or if he's comfortable with non-convertible debentures listed on stock exchanges, he can probably invest into those product in such a product where he will get fixed returns and it's going to be less on the risk part. Now, there is going to be surely a shortfall into what he requires, and I do see that he has certain investments made in which he contributes about 1 lakh per annum into tax-saving mutual funds. So what he could do is probably the shortfall he can start redeeming out of that corpus and use it for child's education. But for that also, he needs to stop investing into SIPs from today. Whatever investments you make into the ELSS SIPs, they get locked in for 3 years from the time you make the investment. So if he requires 5 years from now, he needs to stop making those investments into ELSS SIPs.
He can choose any of the regular open-ended schemes, just that he may not get tax benefits under 80C. That is what if he requires. So he just needs to make a little bit of a prudent call on this kind of an option, whether he wants tax benefits or he needs the funds for his child's education. Fair enough, Harsh. Thanks a lot for joining us with your advice.